Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid, and I hope you all are doing great. The topic for today's video is structural family counseling, in which we will study about what it is and then what are its goals, its strengths, its limitations, its techniques. So let's start with the video. So, structural family counseling is a type of therapy that focuses on the structure and dynamics of the family system. ठीक है, तो ये एक फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डायनामिक्स क्या है हर एक फैमिली मेंबर के, ये उस पे फोकस करती है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक फैमिली में वो यूजुअली एक रिजिड या डिसफंक्शनल फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से कॉज होती है। तो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपिस्ट जो होते हैं दे स्ट्राइव टू एंटर और ज्वाइन द फैमिली सिस्टम इन थेरेपी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनविजिबल रूल्स व्हिच गवर्न इट्स फंक्शनिंग, map the relationship between family members or between subsets of the family, and ultimately disrupt dysfunctional relationships within the family, causing it to stabilize into healthier patterns. तो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपिस्ट जो होते हैं दे स्ट्राइव टू एंटर या ज्वाइन, मतलब बेसिकली जो फैमिली सिस्टम होते हैं थेरेपी में उसको एंटर करना या ज्वाइन करना, जिससे कि वो समझ पाए कि कौन से इनविजिबल रूल्स हैं जो कि इस फैमिली की फंक्शनिंग को गवर्न कर रहे हैं, और उसके बाद वो मैप आउट कर पाए रिलेशनशिप को कि फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसी रिलेशनशिप है, या फिर हम बोल सकते हैं सबसेट्स ऑफ फैमिली। एंड अल्टीमेटली डिसरप्ट डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स क्या है फैमिली के बीच में, उसको समझ पाए, कॉजिंग इट टू स्टेबलाइज इनटू हेल्दियर पैटर्न्स, जिससे कि फाइनली वो एक प्लान बना के उसको एक हेल्दियर, वो जो डिसरप्टिव पैटर्न्स है उनको हेल्दियर पैटर्न में कन्वर्ट कर पाए। Then it is a therapeutic approach which focus on understanding and addressing family dynamics and structure, and it views families as system with interconnected roles, rules, and boundaries that can contribute to problems or challenges within the family. ठीक है, तो ये ऐसे व्यू करता है फैमिली को कि देर आर इंटरकनेक्टेड रोल्स हैं, रूल्स हैं और बाउंड्रीज हैं जो कि कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस विद इन द फैमिली। देन जो गोल होता है एसएफसी का, स्ट्रक्चरल फैमिली काउंसलिंग का, इट्स दैट इट इज टू हेल्प फैमिलीज रीऑर्गेनाइज and adjust their structure to promote healthier interaction and resolve issues। ठीक है, तो इसका गोल ही यही होता है कि रीऑर्गेनाइज करे फैमिली में जो भी स्ट्रक्चर है और हेल्दियर इंटरेक्शन प्रमोट करें टू रिजॉल्व इश्यूज। देन हाउ डज इट व्यू नेचर, व्यू ह्यूमन नेचर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज गिवन बाय सेल्वाडोर म्यूनिचिन इन 1921, एंड उनके अकॉर्डिंग हर फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स इज द इनफॉर्मल वे इन विच अ फैमिली ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ एंड इंटरैक्ट। ठीक है कि सारा लाइक डोमिनेंट रोल डिसीजंस लेने में सिर्फ सपोज फैमिली में सिर्फ पापा कर रहे हैं, तो दैट्स लाइक एक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो गया इनफॉर्मल वे में, कि लोग एंड उसी बेसिस पे इंटरेक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को फैमिली में, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो अगर एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है तो पीपल कैन रिलेट वेल टू ईच अदर, बट अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है या फिर देर इज दिस लिटिल स्ट्रक्चर, तो डेवलपमेंटल या सिचुएशनल इवेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि फैमिली, तो देर वुड बी लाइक डेवलपमेंटल या सिचुएशनल इवेंट्स जो कि फैमिली स्ट्रेस इंक्रीज कर देंगे, या रिजिडिटी या केओस या डिसफंक्शनैलिटी, जिससे फैमिली क्राइसिस में चली जाएगी। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में coalitions, which means alliances between specific members against a third member, वो सब होने लगेगा, coalitions होने लगेंगे, या cross generational alliances होने लगेंगे, like alliances between family members of two different generations, and neither works well in the healthy growth of individuals or a family। ठीक है, तो ऐसे problems arise होंगी। Then moving on to the role of the counselor, structural family counseling practitioners are both observers and experts in making interventions to modify and change the underlying structure of a family.
So they advocate for structural changes in the organization of the family unit with particular attention or changing interactional patterns in subsystems of the family, such as in the marital dyad. ठीक है कि फैमिली में मतलब मैरिटल डायट का एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि सारा डोमिनेंट रोल जो है वो सिर्फ फादर पे है, तो ऐसे में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने जरूरी है उस कपल में। डोमिनेंस को डिवाइड करना जरूरी है, कुछ चीजों का डिवीजन लाइक ऐसे होना चाहिए कि कुछ चीजें मॉम हैंडल कर रही हैं, कुछ चीजें डैड हैंडल कर रहे हैं। सो in that way there should be structural changes in such couple. Then they also work at establishing clear boundaries among family members. In working with families, structural family counselors join with the family in a position of leadership. They map within their minds the structure of a family, determining how it is stuck in a dysfunctional pattern and how to help it change. Then moving on to its applications, so it can be used for parent-child conflicts, or it can be used for marital and relationship issues. It can be used for family dysfunction, या फिर in case of blended families, like it help blended families navigate कि कैसे integrate करना है step children या step parents को एक family structure में. It can also be used for eating disorders and mental health issues. Then family facing crisis like trauma or loss or significant life changes. तो उन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है. देन मूविंग ऑन टू द टेक्निक्स, तो एक प्राइमरी टेक्निक तो ये है कि फैमिली इंटरेक्शन पे वर्क करना. When family members repeat non-productive sequence of behaviors or demonstrate a disengaged or enmeshed position in the family structure, the counselor will rearrange the physical environment so they have to act in a different way. The technique may be as simple as having people face each other when they talk. ठीक है, like suppose there are some non-productive sequences of behavior की जो suppose कि जो भी females हैं एक family में, they can't sit with their husbands, or like they have to eat after their husbands. um, पहले बाकी सब खाएंगे उसके बाद वो सब खाएंगी, तो इससे लाइक एक नॉन प्रोडक्टिव सीक्वेंस बन रहा है बिहेवियर का, जिससे कि वुमेन को उतना इम्पोर्टेंट फील नहीं हो रहा, वैल्यूड फील नहीं हो रहा फैमिली में. तो काउंसलर जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट ही रीअरेंज करेगा कि वो एक्ट करे डिफरेंट वे में. लाइक इट कैन बी जस्ट लाइक कि बात करते समय जस्ट यू विल हैव टू सी ईच अदर, ये इतना सिंपल भी हो सकता है बिकॉज यूजुअली लाइक लाइक women, like we are living in a patriotic, sorry, patriotic बोल रही हूँ. um, what is the term, patriarchal, yeah, patriarchal society. So it's like it is supposed कि women देख के नहीं बोलेंगी आंखों में, उनको आंखें नीचे रखनी होती हैं. तो उस टाइम पे काउंसलर जो है वो उनको समझाएगा कि while talking, look at each other, face each other. ठीक है. Then structural family counselors also use reframing, which is a technique that involves helping the family see its problems from a different and more positive perspective. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, तो instead of labeling him as कि बदतमीज है, you can just say कि शैतान है. you know so instead of saying that the child is incorrigible, you can use the term naughty. इससे क्या होगा, जो बच्चा है उसके जो एक्शंस हैं वो कम खतरनाक, खतरनाक इन द सेंस कि उसको उतना ज्यादा वैसे नहीं देखा जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई, या फिर जो बच्चा है वो बहुत खराब है. So words actually matter a lot. So reframing is one of the techniques that should be used. Then punctuation, which is the selective description of a transaction. For instance, declaring a person competent at a specific moment in time, such as when they are silent. ठीक है. तो पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट. ठीक है कि एक इंसान को तुम कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दे रहे हो एक स्पेसिफिक मोमेंट में टाइम के, जब वो लाइक साइलेंट है. तो इन सब चीजों का ये जो बिहेवियर है इसको डिसरप्ट करना. ठीक है. तो द सिलेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन. देन अनबैलेंसिंग,
procedure wherein the counselor supports an individual or subsystem against the rest of the family. ठीक है? Like a daughter who's longing for a later curfew against her parents. ठीक है? तो यहाँ पे काउंसलर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर सब सिस्टम को सपोर्ट करता है और बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं, जैसे कि फैमिली में सपोज जो डॉटर है वो बोल रही है कि कर्फ्यू टाइमिंग 8 बजे करो, और 6 बजे है, तो उस टाइम पे काउंसलर विल सपोर्ट द डॉटर ऑफ द हाउस, उसके लिए कर्फ्यू टाइमिंग थोड़ा लेट कर दो, तो दैट इज अनबैलेंसिंग. देन व्हाट इज इनैक्टमेंट? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है दैट कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ब्रिंगिंग देयर प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, जैसे कि मेकिंग डिसीजंस इनटू ट्रीटमेंट सेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग देम. ठीक है, कि कैसे डिसीजंस बनाए जाते हैं, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है थेरेपी सेशन में. और इस प्रोसेस में जो काउंसलर होता है वो चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को और रूल्स को, as the family gains heightened awareness of the way they function. ठीक है, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है. तो enactment helps in that way. It creates awareness among family members. Then boundary making. So the process of creating lines that separate people or subsystems from each other psychologically in order to maximize individual and group development and functioning. ठीक है, तो it is like कि देयर शुड बी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, लाइक लाइंस होनी चाहिए जो कि लोगों को सेपरेट करे या फिर सब सिस्टम को फ्रॉम ईच अदर साइकोलॉजिकली, जिससे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट और ग्रुप डेवलपमेंट इंक्रीज हो सके. Then sculpting and positioning, which is like counselor may use techniques like family sculpting, जहाँ पे family members को physically arrange किया जाएगा to represent कि उनकी emotional position क्या है family structure में. इससे क्या होगा कि family dynamics को visualize किया जा सकता है. ठीक है, then moving on to intensity. So it is like the structural method of changing maladaptive transactions by using strong affect, repeated intervention, or prolonged pressure in order to help an individual or family reach a goal by doing something differently. ठीक है, तो मतलब इसमें माल अडेप्टिव जो भी बिहेवियर्स है उनको चेंज किया जाता है स्ट्रॉन्ग अफेक्ट यूज करके, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को यूज करके, या फिर एक ही टेक्निक को बार बार यूज करके, या फिर बहुत टाइम तक प्रेशर डाल के एक इंडिविजुअल पे या फिर एक फैमिली सबसेट ऑफ फैमिली पे, सो दैट दे कैन रीच अ गोल, कोई चीज डिफरेंटली देते. ठीक है, देन रीस्ट्रक्चरिंग, चेंज कर देना स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली, हायरार्की चेंज करके, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग हायरार्की है उसको चेंज करके, या फिर इंटरेक्शन पैटर्न्स को चेंज करके, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है वो मेंटेन, मतलब कि वो ना रहे. फॉर एग्जाम्पल कि यूनिफॉर्मली रिफ्यूजिंग टू ओबे अ सर्टेन रिक्वेस्ट और टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे. ठीक है, यूनिफॉर्मली रिफ्यूजिंग. Then realigning hierarchies. So जो counselor है, he or she may work to re-establish appropriate hierarchies within the family, ensure करके कि जो parents हैं उनको rightful role मिल रहा है as authority figures, और जो बच्चे हैं उनको बच्चों की उनको भी like freedom मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए. Then communication patterns, तो family members को encourage किया जाता है to express themselves openly and respectfully. Then there should be adding of cognitive constructions, which is like verbal component of what is a primarily action-oriented approach that includes advice, information, pragmatic fictions, that is pronouncement that help people change, such as you are capable, and paradox, the confusing message such as don't change, meant to frustrate and motivate to seek alternative actions. Okay, so these are few of the techniques which are used. Then talking about the strength of structural family counseling. So this approach is quite versatile, being a process that is appropriate for socio-economic, low socio-economic level families as well as for other families. ये approach effective होता है and it has been used in treating juvenile delinquents, alcoholics and anorexics. Then it is culturally sensitive and it is appropriate for use in multicultural settings.
This approach is clear in its definition of terms and procedures and is easily applicable. Then the approach emphasizes symptom removal and a reorganization of the family in a pragmatic way. You get so these are some of the strengths. Then moving on to the limitations. So limitations में क्या है? Critics have charged that structural work is not complex enough, maybe sexist at times, and focuses too much on the present. ये भी accusation किया गया है that it has been influenced by strategic family therapy and the charge that it is difficult to distinguish it from strategic therapy at times, जो कि हम पढ़ेंगे in next video कि strategic family therapy क्या होती है. Then, since the counselor is in charge of the process of change, families may not become empowered enough, जो कि उनका overall adjustment and change in the future इस चीज को वो लिमिट कर देगा. देन कुछ फैमिली मेंबर्स रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं जिससे काउंसलिंग प्रोसेस इम्पीड होगी. देन ये जो अप्रोच है इट मे नॉट फुल्ली कंसीडर कल्चरल और डाइवर्सिटी रिलेटेड फैक्टर्स जो कि फैमिली डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. और कुछ केसेस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं फॉर प्रॉब्लम्स, स्पेशली जब पावर इम्बैलेंस हो या फिर अलायंसेस जो या फिर अलायंसेस आइडेंटिफाई किए जा रहे, कि ये दो लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस पर्सन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये जो ब्लेम है इट कैन क्रिएट एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. सो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस. So that was it about structural family counseling. I hope it is clear. So if you have any doubt in structural family counseling, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching the video.